So today our topic of discussion is trace of a matrix. So we have to found how to determine trace of a matrix. Okay. So चलो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. डेफिनेशन ये है, द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इट ट्रेस एंड डिनोटेड बाय टीआर ऑफ ए. सो एक एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ कि ट्रेस क्या होता है. बेसिकली ट्रेस ये होता है, एक मैट्रिक्स मिलता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, ट्रेस वो होता है उसका डायगोनल का सम होता है, मतलब ओके. तो इसका क्या होगा, इस डायगोनल का सम होगा. कैसे होगा वो हम दिखाते हैं. ठीक है. सो टू डिटरमाइन ट्रेस, इफ द मैट्रिक्स ए इज फ्रॉम ए आई जे फॉर्म ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स. ओके, देन ट्रेस ऑफ ए क्या है, समेशन i इक्वल टू 1 to n a I I. दैट्स इफ अ मैट्रिक्स a equal to 3 cross 3, then what is the value of trace of a is, देखो a I means that is a1 1, that is a1 2, that is a1 3, a2 1, a2 2, a2 3, a3 1, a3 2, a3 3. a I means that is summation I equal to 1 to, for 3 cross 3 के लिए I equal to 3 a1 1 plus a1 2 plus a1 3. That is not summation, that is equal to for a2 2 and a3 3. ये है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. ओके, ठीक है. मैं और एक बार कह दूं के समेशन I इक्वल टू 1 to 3 a that means a11 plus a22 plus a33. सो a11 का वैल्यू कितना है 1, a22 का वैल्यू कितना है 5 और a33 का वैल्यू कितना है 9. सो देम सम इज 9 5 and 6 15. So the trace value of a is 15. Okay, now we have to showing some properties of trace of a. The first property is trace of, if I have two matrix, that is a equal to 1 2 2 3 and b equal to 2 3 3 4. okay, then trace of a plus b क्या होगा, समेशन I इक्वल टू 1 to n a I plus b I. दैट इज इसका ट्रेस एंड इसका ट्रेस सम होगा. इसका ट्रेस क्या होगा 3 plus 1 4, इसका ट्रेस क्या होगा 4 to 6, 6 and 4 10. okay, in similar way properties number 2, trace of k of a, then I equal to 1 to n k a I. that is k just multiply with the trace. You have to find first trace and then k multiply with them. And the third property is most important, that is trace of AB equal to trace of BA. We have to find, we know that it's most important. okay, कैसे हुआ, मतलब ट्रेस ऑफ AB का हमको क्या लिख सकते हैं कि AB का I, मतलब हमने A को ट्रेस ऑफ A को कैसे लिख सकते हैं A of I. that is okay, इसका हम कैसे लिख सकते हैं स्मॉल a of I, मतलब 1 1 प्लस a1 2 प्लस ऐसे ही. सो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन j इक्वल टू 1 to n, समेशन I इक्वल टू 1 to n a of ij b of j I. ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन j इक्वल टू 1 to n b a of jj. हमने I से jj पर ट्रांसफर कर दिया. ठीक है, उसके बाद इसको हम कर सकते हैं ट्रेस ऑफ बी. सो प्रूव. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब करो और लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल देन बाय बाय.